is already with you. Here we are. Visible? Yes, sir. Okay. So these are now the current affairs of science and technology from September to November. We have already covered December to March. So let's see one by one. They are all on the basis of date only. Right? Here we are. So Space Tech Innovation Network of ISRO. As you know, as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2020, we allowed private sector companies to become part and parcel of the space program in India more openly than before. So therefore, now we are, providing certain platforms through which these private entrepreneurs can join the space program through ISRO, of course. So recently in this category only, ISRO has signed a MOU with Social Alpha, a multi-stage innovation curation and venture development platform to launch Space Tech Innovation Network or SPIN. तो प्रीलिम्स में पहले तो यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्पिन, ठीक है? और ये सोशल अल्फा कंपनी का नाम याद रखना है, ये है क्या? इट्स अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म. देन SPIN is India's first dedicated platform for innovation, curation, and venture development for the burgeoning space entrepreneurial ecosystem. So it would create a level playing field for various stakeholders to collaborate and contribute to the space ecosystem. Primarily focuses on facilitating space tech entrepreneurs in three distinct innovation categories: geospatial and downstream application, enabling technologies for space and mobility, aerospace materials, sensors, and avionics. The avionics that you have in the Earth's atmosphere, they are completely different from what you need in space. इस वजह से जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अगर सपोज किसी ने BSc एविएशन कर भी रखा है, तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्पेस में उसको समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बस इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में सफिशिएंट होनी चाहिए. Right? Then binary merger of gamma ray burst with kilonova. Let's see. So, a rare astronomical event involving a compact binary merger emitting long gamma ray burst twinned with kilonova emissions was reported. The never before scientifically accepted or proven combination was also confirmed by India's largest optical telescope, the Devasthal Optical Telescope. तो प्रीलिम्स में पहले तो यही चाहिए हमें, इंडिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप कौन सा है? ओके, अब ये गामा रे बर्स्ट क्या होता है? बस बेसिकली प्रीलिम्स में तो इतना बेसिक लेवल पे ही क्वेश्चन आएगा. So they are massive but extremely bright, high energy, short gamma radiations which get released when massive stars collapse or dies in the universe. That is a gamma ray burst. Yes, itna hi chahiye. Okay. Long gamma ray burst, short gamma ray burst. So what is the difference between them? So they observe long bursts in association with the demise of massive star, and short gamma ray burst on the other hand when pairs of compact objects such as neutron star, which always form during stellar collapse, spiral inward over billions of years and collide. तो शॉर्ट गामा रे बर्स्ट होता है कोलिजन के बेसिस पे, लॉन्ग गामा रे बर्स्ट होता है डिमाइस के बेसिस पे. ये दो चीजें. तो जैसे दिया बुझने से पहले एकदम से रोशनी देता है ना, वैसे ही स्टार के अंदर भी, ठीक है? तो बस ऐसे याद रख लेना. तो गामा रे बर्स्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप. ओके, मूविंग ऑन. चैट जीपीटी चैटबॉट, ये तो आपने पहले भी कर लिया. तो it's essentially an open AI is the software introducer. That's the company which has produced it. Right now, Microsoft has already bought OpenAI, ChatGPT. Okay, so this is done. अभी हमने पढ़ लिया कि गूगल भी अपना डेवलप कर रहा है. तो ये पुराना था, नए के अंदर आपने पढ़ लिया, दोबारा से यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, सो 2018-19 में अब एआई के ऊपर जब भी कुछ होता है ना, तो नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं. देखिए 2020 में उन्होंने पूछा, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग. So bring down electricity consumption in electric or industrial firms. So definitely this is a possibility because AI के बेसिस पे आप लोड अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है?
क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग, हाँ चैट जीपीटी कर ही तो रहे। डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज डायग्नोसिस क्या एआई खुद से कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, डिपेंड करता है, आप उसको सफिशिएंट मटेरियल तो दोगे ही ना काम करने के लिए। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन डेफिनेटली। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या ये एआई के लिए पॉसिबिलिटी है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? नो, ये वाला एस्पेक्ट अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसके लिए तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगा, ये सॉफ्टवेयर इनेबल्ड नहीं है। तो इसमें बस देखने वाली बात इतनी सी है कि क्या ये सॉफ्टवेयर इनेबल्ड है या नहीं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आना होना चाहिए 1 2 3 एंड 4, लेकिन यूपीएससी ने जो इसका आंसर दिया वो था 1 3 एंड 4, ऑप्शन नहीं दिया एज इट इज कहें तो 1 2 3 एंड 4। तो इसलिए हमारे पास बचा ऑप्शन क्या है, ये ठीक है? होता तो इसमें 1 2 3 एंड 4 भी होना चाहिए था। ठीक है, देन फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, बेल 2 एक्सपेरिमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर cas9। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज फॉर digital cryptocurrency, that's what we know. CRISPR Cas9 is for genetic editing or gene editing, so this is not correctly matched. Bell 2 experiment, artificial intelligence, so even this is not correctly matched. So Bell 2 experiment was for what purpose? Anybody? चलिए देखते हैं। Particle physics. So we designed to study the properties of B mesons, okay, and other particles. So Bell 2 is the successor of Bell experiment. So it was commissioned by Super KEKB. ओके, सो ये 2018 के करंट अफेयर्स में से कहीं होगा बेल 2 एक्सपेरिमेंट, तो अभी हमें नहीं चाहिए, अदरवाइज ये पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट था। एयर ब्रीदिंग इंजन्स, सो recently ISRO has successfully conducted a hot test of scramjet engine, a type of air breathing engine. See, कभी भी डायरेक्ट एयर इनटेक होता है अगर किसी इंजन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैमजेट। ओके, and it is the India is the fourth country to demonstrate flight testing of the scramjet engine. So what are these air breathing engines? What are they? Just come to this types. Ramjet. So ramjet is a form of air breathing engine that uses the vehicle's forward motion to compress the incoming air for combustion without a rotating compressor. So they are called ramjets. जैसे कि कार्स में कई बार ये यूज होता है टर्बो के लिए, उसमें फॉरवर्ड मोशन ऑफ कार इज यूज्ड फॉर सकिंग द एयर इन। So ramjet works most efficiently at supersonic speeds, but they are not efficient at hypersonic speed. Mach 1 ऊपर ऊपर चलेगा, हाइपरसोनिक मींस यू कैन से मार्क 5 मार्क 7 के ऊपर, देन ये भी आगे आ जाएगा स्पीड रेंज। स्क्रैमजेट, so a scramjet engine is an improvement over ramjet as it efficiently operates at hypersonic speeds and allows supersonic combustion also. Dual mode ramjet, so a dual mode ramjet is a type of jet engine whereas ramjet transforms into scramjet over Mach 4 to 8 range, means 4 to 8 times the speed of sound. It efficiently operates at both subsonic and supersonic combustion modes. तो स्क्रैमजेट की टेस्टिंग इसलिए जरूरी थी क्योंकि सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड पे हम उसको ऑपरेट कर पाए। ठीक है, सो सबसोनिक इज बेसिकली 0.8 मार्क नंबर, 274 मीटर पर सेकेंड से कम वेलोसिटी है। ट्रांससोनिक मीन्स समवेयर इन दैट रेंज, 0.8 to 1.2. Supersonic is 1.2 to 5 Mach. So anywhere above 5 Mach is hypersonic. So this is the kind of velocity we are talking about. And high hypersonic, so that is above 10 Mach. This is very difficult to achieve for any kind of aircraft, except for there has been one that is SR-71 Blackbird. This aircraft was supposed to fly at this at least Mach 10, nearby Mach 10. ठीक है, मार्क 7 मार्क 8 तो ये अचीव किया है टेस्टिंग के अंदर, लेकिन यहाँ तक भी जा सकता है। इट कैन बी हाई हाइपरसोनिक, अभी इसमें टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, ओके,
तो इसलिए और one more thing, if you're flying with that kind of speed, you don't need any kind of stealth, you don't need any kind of uh, weapon protection or any kind of systems because no missile will be able to touch you. Okay, missiles are limited to supersonic. They don't go hypersonic. Next, significance. So air breathing engines provide a technology key for low cost space transportation system. Technology is an important step towards developing reusable launch vehicles. एक्चुअली क्या है ना, सबसे ज्यादा जो वेस्टेज है वो लॉन्च व्हीकल्स के अंदर होती थी. अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स इलॉन मस्क ने पायनियर किया, उसके बाद अमेजोन ने डेवलप किया, सो दे हैव बीन क्रिएटिंग इट. अभी उसके बाद हम भी कोशिश कर रहे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की. नासा हैज already pioneered this shuttle program, but there also the rockets that were used, they would always be wasted. Now we're trying to bring back the entire rocket. So that's what the aspect is. So basically the total launch vehicle mass, 86% is the propellant mass in the launch vehicle. Out of the propellant, 70% is the oxidizer, means oxygen. These engines can reduce nearly 70% of the propellant carried in the vehicle. And as these systems use atmospheric oxygen, which is available up to the height of 50 kilometers. तो एटलीस्ट स्क्रैमजेट इंजन के अंदर क्या होगा ना कि जब तक एटमोसफियर में है तब तक ऑक्सीजन यूज कर ले, उसके बाद जो प्रोपेलेंट ऑक्सीजन अवेलेबल है वो यूज करना शुरू कर दे. तो वी कैन सेट टाइमिंग, उसके बाद वो फायर होना शुरू होगा. ठीक है. ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई. So India has been handed over the presidency of Global Partnership on Artificial Intelligence for 2022-23 uh, by the outgoing Council Chair France in its third annual summit in Japan. So simple सा question आ सकता है, who has the presidency for Global Partnership on Artificial Intelligence? That's it. एक ये question बनेगा. अभी ये है क्या? GPAI launched in June 2020. It's a global partnership in artificial intelligence and is described as the fusion of an idea developed within G7. Okay, so it's a multi-stakeholder initiative for AI. We are just trying to bridge the gap between theory and practice on artificial intelligence. How many members are there? So there are about 25 member states. So UPSC में ये क्वेश्चन सो आने से रहा. फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? तो उधर भी बहुत सारे हैं. तो इंडिया उसमें फाउंडिंग मेंबर है. बस इतना ध्यान रखना. अभी भी मेंबर है, पहले भी था. पाकिस्तान ना फाउंडिंग मेंबर है और ना अब है. चाइना भी नहीं है अगर ध्यान से देखो तो. क्यों? क्योंकि चाहते नहीं हम कि चाइना इसमें आए. ऑब्वियस है ना. ओके. वो चाइना भी नहीं जाएगा कि इसमें आए, वो अपना एआई डेवलप करके बैठे हैं ऑलरेडी. Digital Personal Data Protection Bill 2022. So this has been a lot in news. Essentially, right after right to privacy being introduced in India as a part and parcel of Article 21, there has been, talks about data protection and data localization. Because for data protection, one thing that has been thought of as key is localization. That if it is in India's jurisdiction, then we can protect you better. Okay, so this is the idea behind it. So that's where the Digital Personal Data Protection Bill is working in these two areas. Okay. So there are 7 principles in means के लिए आएगा, prelims में नहीं. Data principle and data fiduciary. So let's see. So data principle refers to the individual whose data is being collected. Data fiduciary is the entity which decides the purpose and means of the processing of an individual's personal data. फिड्यूशरी किसको बोलते हैं? अगर फिड्यूशरी करेंसी की बात करें तो फिड्यूशरी उसमें कहते हैं जिसमें हमें विश्वास होता है. तो डेटा फिड्यूशरी भी वो है जो हमारा विश्वास पात्र है. यहाँ पे वो विश्वास पात्र गवर्नमेंट हो सकता है, कंपनी हो सकता है, और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसको आपने वो डेटा के राइट्स दिए. वो डिसाइड करेगा कि कैसे यूज करना है. ठीक है. तो ये 2 वोकैबुलरीज नोन होनी चाहिए. फाइन. So in case of children less than 18 years, their parents, etc., are considered as data participants.
And who can be a data fiduciary? Individual, company, firm or state. ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के अंदर. As per the Data Protection Bill 2022, which of the following can be data fiduciary? Can play the role of data fiduciary like this. So they can say a private company, government of India, uh, an individual, all of the above. ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, ये सब नहीं चाहिए हमें. ये मीन्स के मामले हैं, उधर ही रहने दो. हाँ, इधर है फाइनेंशियल पेनल्टीज एंड एग्जेम्पशंस, ये चाहिए. So for data fiduciary, the bill proposes to impose significant penalties on businesses that undergo data breaches or fail to notify the user when breach happens. It imposed ranging from 50 crore to 500 crore. Data principle. So if the user submits false documents while signing up for an online service or files for frivolous grievance complaints, the user could be fined up to rupees 10,000. So there is a user and the fiduciary, दोनों के लिए फाइनेंशियल implications हैं बिल के अंदर. इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे वो तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना. एग्जेम्पशन क्या है? The government can exempt the government certain businesses from adhering to the provisions of the bill on the basis of the number of users and the volume of personal data processed by the entity. कि अगर आप बहुत कम ही लोगों से डील कर रहे हो या लेट्स से आपके पास मैक्सिमम डेटा इतने केबी का है या एमबी का है, तो फिर आप एग्जेम्प्ट हो. ऐसे भी कर सकते हैं. तो बहुत छोटी कंपनी है, उनको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है. ओके, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एग्जेम्पशंस. तो ये 2019 के बिल में भी था, अब भी है. तो कुछ भी रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी होगा. So center has been empowered to exempt its agencies from adhering to the provisions of the bill, like any of the agencies of the central government for that matter. Maybe it's RBI, maybe it is SBI, maybe it is Army, maybe it is Air Force, anything. Okay. So ये ध्यान रखना. Then why is digital data protection bill significant, etc. ये सब मेन से क्वेश्चंस हैं. एक ये जो उसके ऊपर पुरानी कमिटीज बन रखी हैं, इनके नाम याद रखने हैं सिर्फ. ऐसे एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि which of the following committees in India are related to data protection, like this. Okay, so Justice K.S. Puttaswamy Committee or judgment, in fact, then B.N. Sri Krishna Committee 2017 and IT Rules 2021. ये सब they are related to data protection. बस ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है maximum. Then Russia's advanced fuel option for KKNP. So recently, Russian-owned state nuclear energy corporation Rosatom, इसका बस नाम याद रखना, बहुत न्यूज में has offered more advanced fuel options to India's largest nuclear power plant at Kudankulam nuclear power plant, Tamil Nadu, and it will allow reactor to run for an extended 2-year cycle without stopping to load fresh fuel. So that's always beneficial. कि waste management तब 2 साल बाद करना पड़ेगा, अभी नहीं करना पड़ेगा. Asian Conference on Diarrheal Diseases and Nutrition. So not a very important thing. You can just move on. इसमें डायरिया को लेके हमारे इंडिया में क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में उतना नहीं आएगा. इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर. सो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया. सो गवर्नमेंट हैज सेट अप द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक and the regional center for biotechnology in Faridabad. It is also better known as the Indian Biological Data Center. Okay, तो प्री में इतना, एक तो इसका लोकेशन याद रखना है. फिर ये है क्या? It is the first national repository of life sciences data in India, where data will not only be submitted from across India but also accessed by researchers across India. Mandated to archive all life sciences data, publicly funded research. It is supported by Department of Biotechnology in collaboration with National Informatics Center, Bhubaneswar. So this is a job. Then key features. The digitized data will be stored on a 4 petabyte supercomputer called as RAM. A petabyte is equal to 10 lakh gigabyte. Now, different sections of IBDC
would typically deal with particular type of life science data. Fine, इसके आगे चलते हैं, ये सब नहीं चाहिए अभी. What will be the significance of this? It will reduce dependency of Indian researchers on American and European data banks. It will not only prove a platform for researchers to securely store data within the country, it will also provide the access to a large database of indigenous sequences for analysis. तो हमें कल को अपनी वैक्सीन बनानी है, थेरेप्यूटिक्स में काम करना है, तो हमारे पास इंडियन जेनेटिक्स के बेसिस पे डेटा होगा, इंडियन लाइफ साइंस के बेसिस पे डेटा होगा. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. So till now, this entire research was either done outside the country or based upon the data not Indian in nature. So anyhow, right? किस तरह का डेटा होगा? तो digitized genetic makeup of humans, plants, animals and microbes, all Indian. Fine. बस इतना चाहिए इसके बारे में. आगे बढ़िए. Digital Shakti 4.0. The National Commission for Women has recently launched the fourth phase of the Digital Shakti campaign. What is this? It launched it with the collaboration with Cyber Peace Foundation and Meta. Meta means Facebook. Okay? तो बस ये दो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट चाहिए कि किसके साथ कोलैबोरेशन किया, किसने लॉन्च किया. अब ये है क्या डिजिटल शक्ति? जून 2018 में शुरू किया. हेल्प women across nation to raise the awareness level on digital front. Okay, that's that. Finished. आगे रही. Third attempt for Artemis 1. So NASA has successfully launched its unmanned moon mission Artemis 1 on 16th November 2022. मून मिशन लॉन्च करने में ना नासा हमेशा जैसे अपोलो नवंबर 11 तक चला गया, फिर जाके पहुंचा. तो नासा की हिस्ट्री थोड़ी सी खराब रही है मून को लेके. रिश्ता अच्छा नहीं है इनका, चांद की दशा सही नहीं बैठती इन पे. So after multiple delays caused by technology failures and natural disasters spread across 2 months, Space Launch Systems rocket has lifted off from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral in Florida. So anyhow, so Artemis 3 के अंदर ये थर्ड अटेम्प्ट के अंदर Artemis 1 जो है वो लिफ्ट ऑफ किया है. Now what is this? Let's see. Artemis 1 is the first in a series of increasingly complex missions to build a long-term human presence on Moon for the decades to come. So they are trying to set up like a colony there. Okay. So it is the only a lunar orbiter mission, even though unlike most orbiter missions, it has a return to Earth target. पहले ऑर्बिट करेगा, उसके बाद वापस भी आना. नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि रिटर्न टू अर्थ वाला टारगेट हो. तो इसके बाद Artemis 2 is planned for 2024. So this will have a crew aboard Orion. So and will be a test mission to confirm that all spacecraft systems will operate as designed when it has humans on board. So ये टेस्टिंग के लिए है. Artemis 3 2025 it will ferry actual astronauts to the moon for the first time since the Apollo missions. तो दोबारा से मून पे 2025 में Artemis 3 लेके जाएगा. तो ये अभी हमारा क्या चल रहा है? Chandrayaan 1. So this was India's first mission to moon. What did we do? So we discovered water. The first mission itself. Yeah. Ice crystals, essentially. Then Chandrayaan 2. So second mission to moon comprises a fully indigenous orbiter, lander and rover. So Vikram and Pragyan. ये prelims के लिए नाम याद रखना है. The rover Pragyan is housed in Vikram lander. And then Chandrayaan 3. So this will comprise of a lander and rover. It has been announced recently, but nothing much in detail. 1, 2 and 3. अभी ये 2 वाला फेज चल रहा है चंद्रयान का. कल भी पढ़ा था. फूड एनिमल फार्मिंग एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. अभी बहुत सारे जो लाइफ स्टॉक है उनको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स देते हैं, इस वजह से उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो बन रहा है, उनको खा के हमारे अंदर भी बन रहा है लाइक दिस. So this is the situation and this is a big issue because पैंडेमिक्स के टाइम पे फिर आपके ऊपर कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती जब कोई इशू होता है ऐसा. तो एनीहाउ, सो अब ये मेंस का इशू ज्यादा है. इस पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. ओके.
एंड दैट्स दैट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मूली बैम्बू, एक तो आपने बैम्बू बैरियर के बारे में पढ़ा, ये नेक्स्ट है। Let's see. So researchers study observed and listed a large variety of animal visitors, predators attracted by fruit and flowers of Mooli bamboo, that is Melocanna bacifera. So let's see. The study found the predation is mainly due to the high content of sugars. The highest ever fruit production in a bamboo clump on of this species was also reported. So what is this Mooli bamboo? So Mooli is a tropical evergreen species of bamboo, and it is the largest fruit producing bamboo and is native to Northeast India and Myanmar region. ये prelims के लिए इतनी information तो चाहिए हो सकती है। It accounts for 90% of the bamboo forest found in Northeast state. तो ऐसा नहीं है कि ये कोई rare occurrence है. Okay, so it can be recognized by diffused clump habit, and the plant is also grown as ornamental. Moutum is a strange ecological phenomena associated with Mooli bamboo that occurs once every 48 years. What is this moutum? Moth matlab mar gaya. Bamboo death. Mizo. Now, during moutum, the cyclical mass bamboo flowering and large fruit production occurs. This attracts animal visitors and predators. Okay. So, black rats greatly relish their fleshy berry-like fruits for Mooli bamboo and multiply rapidly, and there comes a rat flood. तो 40-50 साल में एक बार होता है कि इनके ऊपर ना फूल आते हैं और फल आते हैं। Flowering of bamboo is considered as the once in a 48-year or once in a 40-50-year cycle in general. So that is something that is a troublesome phase for bamboo, and this is what is happening right now in Myanmar region maximum, and 90% of Northeast also. Okay. New products in Make 2 project. Indian Army has approved 5 project sanction orders for the development of niche technology by the Indian industry under Make 2 route of defense procurement. What is Make 2? So these are essentially industry funded projects involving design, development, and innovation solutions by Indian vendors for development of prototypes. 22 out of 43 projects are now prototype development stage, which is 66% of the project cost, 18,000 crore out of 27,000 crore. Anyhow, what they're trying to do is essentially trying to make defense equipment in India. Okay, so that is where Make 2 is. What kind of projects? High frequency, man packed software defined radios, drone kill systems, infantry training weapon simulator, medium range precision kill systems, 155 terminally guided munitions. Okay. So make category में कौन सी चीजें आती हैं? The Make category of capital acquisition is the cornerstone of Make in India initiative, seeks to build indigenous capabilities through involvement of both public and private sector. Make 1 refers to government funded projects. Make 2 are industry funded programs. So big ticket programs, ये prelims में ऐसे याद रखना. Make 1 government, Make 2 private. Okay. Another subcategory, Make 3, is that covers military hardware that may not be designed and developed indigenously but can be manufactured in the country for import substitution. And Indian firms may manufacture them in collaboration with foreign partners, that is Make 3. Okay. Falcon Heavy rocket. So SpaceX launched the Falcon Heavy rocket into geosynchronous Earth orbit from Launch Complex 39A at the Kennedy Space Center. It is the 4th launch of the joint rocket system. So Falcon is a rocket of SpaceX. बस इतना याद रखना. Okay. This is the most powerful rocket in the world by a factor of 2. जब बाकी जो कोई आएंगे उससे आधा ही है. The rocket has a height of 70 meters and mass, you can see, 14,20,788 kgs. So quite a heavy rocket. इसके अलावा बहुत सारा कुछ है. Falcon has 27 Merlin engines. So Merlin is a family of rocket engines developed by SpaceX only. So
इतनी डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। खैर, आपने सिर्फ फैल्कन स्पेसएक्स इतना याद रखना है, ठीक है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन। So genetically modified pig heart took longer than usual to beat for human receiver in the first ever transplant of gene edited pig heart to human. The human recipient lived only for 61 days after the transplant. Prior attempts of such transplant also failed. This also failed. Xeno transplantation का बेसिक सा मतलब क्या होता है प्रीलिम्स में हमें यही चाहिए. It is the transplantation of non-human tissues or organs into human recipients. It's generally a case for failure because there is something called as organ rejection which happens or tissue rejection which happens. हमारी बॉडी के लिए वो एक फॉरेन स्पीशीज जैसा होता है, और जब तक तो हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड रहेगा, इम्यूनो सप्रेसेंट्स हमें देते हैं, तब तक तो ठीक है, वो चलता रहेगा. जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम उसको बाईपास करेगा, इम्यूनो सप्रेसेंट्स को, वो उस एक्सटर्नल ऑर्गन को रिसीव करने की बजाय उसको मारना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस. कोशिश कर रहे हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन करने की हम, लेकिन वो चलती नहीं. फाइन. इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए. स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस, इसका नाम याद रखना है. इट्स सेट टू मेक हिस्ट्री बाय sending India's first privately developed rocket, Vikram S, into space under Prarambh mission. So what does Vikram say? So it is rocket is a single stage suborbital launch vehicle which would carry 3 customer payloads. ऐसा नहीं है कि manned flights हो रही हैं, ठीक है. So it would help test and validate the majority of technologies in the Vikram series of space launch vehicles. Skyroot has been working in 3 different Vikram rocket versions. तो अभी इसरो भी ऐसे ही शुरू हुआ था धीरे धीरे. अभी प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि ये अलाउ किया है तो दे आर ऑल्सो वर्किंग. तो आपको बस इतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में. यू जस्ट नीड टू नो द कंपनीज नेम, द मिशन प्रारंभ एंड विक्रम एस. प्रारंभ मिशन के अंदर कर क्या रहे? प्रारंभ मिशन इज एम्ड एट कैरिंग 3 पेलोड्स इनटू स्पेस. वो तो स्काई रूट सिस्टम का खुद का मिशन है, ठीक है. गवर्नमेंट का उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है. So this Vikram S rocket has been developed by Hyderabad-based startup Skyroot with extensive support from ISRO and InSpace. InSpace is Indian Space Promotion, Indian National Space Promotion and Authorization Center. So ये आपके लिए prelims में extra information. Then Mangalyaan mission is now over finally. So ISRO confirmed the Mars orbiter craft has lost communication and is non-recoverable. The Mangalyaan mission has attained end of life. So that's that for it. इस वजह से अब भी ये प्रीलिम्स में दोबारा एक क्वेश्चन आ सकता है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन था क्या. तो मार्स ऑर्बिटर मिशन was launched on board PSLV C-25 in 2013 and was successfully inserted into Martian orbit in 2014. So almost, if you think of it, a 10 months journey. Yeah. Mangalyaan was India's first interplanetary mission and made India the first Asian country and the 4th in the world after Roscosmos, Russia, NASA, and the European Space Agency to get to the planet. China referred to India's successful Mangalyaan as pride of Asia, in fact. And we did it in the lowest cost possible. That's also important. अभी 2014 में जब इसको इंसर्ट किया, 2016 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा. देखो, Mangalyaan launch by ISRO is also called as Mars orbiter mission. Made India the second country in the spacecraft orbit in the Mars after USA. No, we are the 4th country. दूसरा स्टेटमेंट गलत था. Made India the only country to be successful in making the spacecraft orbit Mars in its very first attempt. तो ये वाला स्टेटमेंट टू एन एक्सटेंट ठीक है कि इससे पहले बाकियों को तो फिर भी 2-2 अटेम्प्ट, 3-3 अटेम्प्ट लगे. हमने पहली बार में कर लिया क्योंकि हमारे पास काफी कॉपी पेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, ठीक है, तो वो हम अच्छे से पढ़ पाए. कार्बन डेटिंग. So recently, a Varanasi district court has rejected the plea to conduct carbon dating of the disputed structure known to have been found inside the premises of the Gyanvapi mosque. Carbon dating is something that is used for knowing the age of an
fossil generally. So carbon dating is the widely used method to the age of organic material that was once living. That's why I use the word fossil. जो स्टोन है जिसमें कोई जान नहीं थी कभी, तो उसका कार्बन डेटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कारण क्या है, हमारे अंदर जब हम जिंदा है ना, तो कार्बन के सारे जो आइसोटोप्स हैं अलग अलग, C12, 13 एंड 14, they keep replenishing naturally, and once we are dead, then the C14 will start decaying over a period of time because it is not getting replenished. So you can check by the amount of depletion that has happened in the C14 in a particular fossil, that how old is it, when did it stop replenishing, like this. Okay. So carbon dating cannot be used to determine the age of non-living things like rocks, for example. Okay. And also the age of things that are more than 40 to 50,000 year old cannot be arrived by carbon dating. Why? Because that's the half life, you know. So this is because they are after 8 to 10 cycles of half lives, the amount of C14 would almost be very small and almost untraceable. C14 का जो half life है वो कितना है? Half life means the amount of radiation emitted by it comes down to half. So here it is. So C12 is stable, C14 is radioactive, and it reduces to one half the radiation in 5730 years. So means in 10 half lives, it will be 57,030 years. That's it. इसके beyond फिर C14 undetectable ही रहेगा in the present scale of equipment that we have. So no good evidence can be found. 8 to 10 cycles में खत्म हो जाता हूँ. अच्छा, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब क्या है ना, देखिए अगर रेडिएशन 1 यूनिट है, हाफ लाइफ के बाद वो 0.5 आएगी, फिर हाफ लाइफ के बाद 0. कितना रह जाएगा 25, फिर हाफ लाइफ के बाद 0.12, ये करते करते इसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी बाय द टाइम, एंड इट विल नॉट इवन शो ऑन द सेंसर्स. What about the dating methods other than carbon dating? So हमारे पास और कौन कौन से होते हैं? So you got potassium argon dating and uranium thorium lead dating. Let's see. So the radioactive isotope of potassium decays into argon, and their ratios can give a clue about the age of rocks. So potassium argon dating is for non-living. Okay. Here uranium thorium lead. Uranium and thorium have several radioactive isotopes, and all of them decay into stable lead atom. So the ratios of these elements present in the material can be measured and used to estimate the age. ये दोनों के दोनों जो है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो सकता है, लेकिन कार्बन डेटिंग लिविंग थिंग्स के लिए. ज्ञान वापी मस्जिद में उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया पोटेशियम आर्गन डेटिंग कर लो, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ा, उन्होंने वैसे ही मान लिया, हाँ ठीक है शिवलिंग उधर. ठीक है. डॉक्टर दिलीप मेहलनोबिस. सो वी नो अबाउट पीसी मेहलनोबिस, एंड मेहलनोबिस सिस्टम महलवाड़ी के अंदर आता है, वो हमने पढ़ लिया था. अभी हाउ इज ही इम्पोर्टेंट? So he is the fellow who developed and pioneered oral rehydration system treatment. So as a simple effective remedy for dehydration. So इनका नाम जरूरी है. He passed away, so that's why he was in news. Now, ORS therapy is calculated by WHO to have saved lives of over 60 million persons. Even till date, we are using ORS like anything. Okay. Then Nimonshu, what is this? So Embassy of Japan, New Delhi, has filed an application seeking GI tag for Nihonshu, Japanese sake. What is this? So the first time a Japanese product will get a GI tag in India. So what is Nihonshu? It is regarded as a special and valuable beverage made from fermenting rice. It's like an alcohol, Japanese alcohol. People traditionally drink Nihonshu on special occasions, festivals, etc., etc. So just Japanese liquor, Nihonshu. Remember just this much. Polio eradication. इंडिया में ना हमें लगता है पोलियो एरेडिकेट हो गया, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई केसेस आ जाते हैं उसका.
कारण क्या है कि जो एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स कई बार यूज किए गए, लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स फॉर पोलियो वैक्सीनेशन, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय, वैक्सीन ढंग से नहीं होती तो फिर से रिकर कर जाता है। ठीक है, वायरस काफी रिजिलियंट होता है अपने आप में। तो global leaders confirmed $2.6 billion in funding towards global polio eradication initiative, uh, a strategy to end polio at World Health Summit in Berlin. So what is this World Health Summit? So it's an international health conference, and it aimed to strengthen exchange, stimulate, and innovative solutions to health challenges, position global health as key political issue, promote a global health conservation in spirit of UN Sustainable Development Goals. Okay, so what do you need to know about polio? There are three individual and immunologically distinct wild poliovirus strains, 1, 2, and 3. Very easy to remember. Symptomatically, all of them are identical. कोई फर्क नहीं है. Spread, so they are transmitted person to person, mainly through fecal oral route. Okay. It largely affects the children under the age of 5 years. Symptoms, most people in the polio do not feel sick. So in rare cases, it causes permanent loss of muscle function and can be fatal if something in like brain gets infected by this. What kind of vaccination is there? So you've got oral polio vaccination and injectable polio vaccination. The only cure is this, and this is what children are given. So you've got India-wide program going for OPV. So India received a polio-free certification from WHO in 2014 after 3 years of zero cases. This happened, but thereafter अभी फिर से हमारे पास रेकरिंग के केसेस आ रहे थे 2018-19 के अंदर. ठीक है, तो फिर ये चैलेंज हो गया था कि भाई इनको कैसे मिल गए. ओके, so there is a pulse polio program, intensified mission इंद्रधनुष, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इन सब के अंदर पोलियो के लिए वर्कआउट चल रहा है. ग्लोबल AI समिट एंड अवार्ड्स, not very important, just focus on the next one. ठीक है, नहीं चाहिए. सेकेंड वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेटिक्स कांग्रेस. सो पहली बात तो ये आएगा कि हुआ किधर. तो रिसेंटली सेकेंड यूएन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेटिक कांग्रेस inaugurated in Hyderabad under the theme Geo Enabling in Global Village, No One Should Be Left Behind. तो ये प्रीलिम्स में इतना चाहिए, सबसे जरूरी. ये है क्या? So the first such congress was held in Peking, Zhejiang province in China, 2018, and objective is to enhance international collaboration at the level of geoinformatics. चाहिए. फिर geospatial technology होता क्या है? यही remote sensing, GIS, geographical information system, surveys, 3D modeling, your GPS navigation systems, ये सारा कुछ geospatial technology के अंदर आता है. तो प्रीलिम्स में एक ये भी क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पार्ट ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी. क्यों? क्योंकि जियोस्पेशियल को ना रेगुलेट करने के लिए एक बिल भी है गवर्नमेंट में, और हम प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ कर रहे हैं जियोस्पेशियल डेटा यूज करने के लिए. तो इसलिए इसके बारे में बेसिक जानकारी प्रीलिम्स में चाहिए. ठीक है. So the term geospatial refers to collection of technologies that help collect, analyze, store, manage, distribute, integrate, and present geographical information. So all of them are part and parcel. प्रीलिम्स में याद रखना है. Significance means का काम है, इधर नहीं चाहिए. ठीक है, फिर आगे here. What are the related initiatives? So there is Google Street View. So this is launched in 10 cities of India under the guidelines on the National Geospatial Policy 2021. Survey of India has developed a web GIS called as SAR3. It will help users in creating applications for geospatial data visualization, manipulation, and analysis without a lot of resources at their end. सारथी यूज करके आप कोई जियोस्पेशियल बेस्ड ऐप जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी हो रखे. देन ऑनलाइन मैप्स पोर्टल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया has over 4,000 maps with national, state, district, and tesi level data for end user. The National Atlas and Thematic Mapping Organization (NATMO) has released thematic maps such as Cultural Map of India, Climatic Map. ये geography पढ़ते टाइम हमें यूज करते हैं. Then there is Bhuvan.
So this is a geo portal developed by ISRO, comprising geospatial data. So we can locate and get a lot of data on this. Association of Geospatial Industries has released a report titled as Potential of Geospatial Technologies for Water Sector in India. तो ये जो कुछ पोर्टल्स है ना, जैसे भुवन, सारथी, ये इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. And then this, what is geospatial? Which all of the following are part of geospatial technologies? 3D मॉडलिंग वहां पे आपको हो सकता है, कुछ और सोच लो आप, लेकिन जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज के अंदर भी तो बिल्डिंग्स की 3D मॉडलिंग आती है, ठीक है. तो ये बी केयरफुल. फाइन. 3D प्रिंटिंग लिखेंगे तो गलत होगा, 3D मॉडलिंग लिखेंगे तो सही होगा. फाइन. मूविंग ऑन. सो इंडिया स्पेस इकोसिस्टम. So recently, Indian Space Conclave was organized to celebrate 1 year anniversary of India Space Association, ISPA. So Indian space economy has reached about $13 billion by 2025. That's the amount of money that we are able to generate or capitalize upon. So there is an annual growth rate of 13% here. So the satellite services and application segment will form the largest share of the space economy, accounting for 36% of the space ecosystem by 2025. इसीलिए इसरो की डेवलपमेंट की वजह से इंडिया को पैसे बनते हैं, और कितने पैसे बनते हैं उसका एक आइडिया है, $13 बिलियन. ठीक है. तो व्हाट इज आईएसपीए, हमें ये चाहिए. आईएसपीए वाज लॉन्च्ड इन 2021, प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ स्पेस सैटेलाइट कंपनीज. ये 2020 में तो आत्मनिर्भर भारत अलाउ किए, उसके बाद शुरू हुआ. It is also part of government's approach to space reform based on 4 pillars: allowing private sector freedom of innovation, government playing as enablers role, preparing youngsters for the future, treating the space sector as a resource for progress of the common man. Okay. So it's a collective voice of Indian space industry. Public, private, common. बस इतना चाहिए. हमारे स्पेस सेक्टर की ज्यादा जानकारी हमें नहीं, अभी प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. यहाँ पे ये वाला मीन्स का एस्पेक्ट ज्यादा है, ठीक है. Come to ISRO's next gen launch vehicle. तो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल का नाम भी वही रखा है, नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल, एनजीएलवी, ठीक है. दैट विल रिप्लेस द पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो इंडिया के कौन कौन से लॉन्च व्हीकल है और उसमें क्या करेंगे? सो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल इज लुकिंग एट अ कॉस्ट एफिशिएंट 3 stage to orbit reusable heavy lift vehicle with a payload capability of 10 tons to geostationary transfer orbit. तो जैसे कि स्पेसएक्स के पास है फैल्कन, तो वैसे ही कुछ हम एनजीएलवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Feature: it will have semi-cryogenic propulsion, so that means refined kerosene as fuel with liquid oxygen as oxidizer. Okay. Potential users will be launching communication satellites, deep space missions, future human space flights and cargo missions. तो ये हमारे अलग अलग रॉकेट सिस्टम्स है जो अभी तक चल रहे हैं. जीएसएलवी, MK3 वगैरह वगैरह सब में बेसिकली स्ट्रैप ऑन मोटर्स जो है वो बड़ी होती जाती है. ये जो साइड में लगी हुई है ये और बड़े होते जाएंगे. So this was the idea: one main rocket, then strap-on motors. So this is augmented SLV, then polar SLV, then geosynchronous SLV. तो हर एक के अंदर Mark 2, Mark 3 में वो साइड वाले जो स्ट्रैप ऑन मोटर है वो बड़े हो जाते हैं. Okay. Then detection of barium in the exoplanet atmosphere. So what does barium signify if it is detected? That's the question that can be asked in UPSC. So let's see. Detected barium in the upper atmosphere of the two giant exoplanets. Ultra-hot Jupiters are a class of hot gaseous planets that matches the size of Jupiter, but they have short orbital periods, unlike Jupiter. Exoplanets किसको बोलते हैं? So these are extrasolar planets. They are called exoplanets, that is outside our solar system, and there are more than 4,400 of them that have been detected so far. Okay. There may be much more. The findings of the study. तो हमें 2 अल्ट्रा हॉट जुपिटर्स के ऊपर बेरियम मिला है. इससे क्या हो जाएगा?
The presence of hydrogen, lithium, sodium, magnesium, calcium, vanadium, chromium, manganese, and iron have also been confirmed in addition to barium. अभी इतने सारे elements अगर होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? My concern is this. Yeah. So barium, which is slightly harder than lead, had a silvery white luster when freshly cut, readily oxidized when exposed to air, must be protected from oxygen. Nature is always found combined with other elements, very light, etc. ये सारे ना स्टार्टर एलिमेंट्स हैं. एसेंशियली पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स मिलते रहेंगे उतने ज्यादा ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ बढ़ने के चांसेस रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ये चार अगर हमें मिल जाए तो एवरीथिंग दैट इज देयर इन द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ दिस ओनली. इसके अलावा और क्या है? फॉस्फोरस है, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम है, थोड़ा बहुत आयरन है, थोड़ा बहुत कॉपर है, थोड़ा बहुत जिंक है. ये सारे माइक्रो लेवल पे है ना? तो ये चार एलिमेंट्स के बेसिस पे बहुत कुछ बनना शुरू हो जाता है. लेकिन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर दी लाइफ एलिमेंट. तो जैसे जैसे इनके आसपास हमें मिलना शुरू होता है हमें लगता है कि लाइफ की डिस्कवरी भी पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट इज IMEI नंबर. व्हाट इज दिस? So it is the International Mobile Equipment Identity. Why is it important? It helps you to identify your handset. That's it. Okay, that is the IMEI number. It's 15 digits. आमतौर पे हमें ये सब मालूम होता है लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सेट्रा कभी पूछ ले तो परेशानी होता है. ठीक है, तो अगर ड्यूअल सिम फोन है तो ड्यूअल IMEI भी होगा. ओके. Who's responsible for this? So the Communications Ministry had earlier rolled out a Central Equipment Identity Register, which categorizes the mobile phones based on their IMEI status in three lists: white, gray, and black categorization. Mobile phones with IMEI number on the white list are permitted for use, while those on the black list are the one that have been reported stolen or lost and are not allowed to access the network. तो अगर आप पुलिस रिपोर्ट करते हो तो आपका IMEI नंबर वो बंद कर देते हैं. तो इसलिए रिपोर्ट करना जरूरी है अगर गुम हो जाए तो. लेकिन अब आप लोग शायद या तो डिब्बा संभाल के नहीं रखते या IMEI नंबर अलग से नोट करके नहीं रखते, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. Devices with IMEI number in the grey list do not conform to standards but are permitted to connect under supervision. तो वहां पे आपको चेक करते रहता है कि आप कर क्या रहे हो. The register also allows DOT to carry out IMEI-based lawful interception. Time to time, it can be stopped also. Okay. Prevention of tampering. In 2017, government notified rules for preventing tampering with the IMEI numbers of the phones by making it punishable offense which could attract a jail terms. This is the way the phone number can be stopped, you know. So IMEI number, you should not be able to change it. So इतना ही चाहिए prelims के लिए. Vande Bharat Express 2.0. So where to where a train is going. Whenever it is launched, just know this much. Okay. So two Vande Bharat Express were operational. One is between Delhi and Varanasi, and the other is from New Delhi to Katra. Okay. Now this is Gandhinagar Mumbai Vande Bharat Express. So these are now तीन हो गई हमारे पास. क्या है वंदे भारत एक्सप्रेस? So they are indigenously designed and manufactured semi-high-speed self-propelled trains and is touted as the next major leap for Indian Railways. First Vande Bharat Express was made at Integral Coach Factory, Chennai, as a part of Make in India program. And this was India's first attempt at adaptation of the train set technology. So compared with the conventional system of passenger coaches hauled by separate locomotives, the train set configuration, though complex, is faster and easier to maintain, consumes less energy, greater flexibility. तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि एक इंजन सारी बोगियां खींच रहा है. यहाँ पे बोगियों में भी जान है, वो अपने आप को खींचते हैं साथ साथ में. ऑफ कोर्स एक लोकोमोटिव रहेगा फ्रंट में, बट entire train is powered just like in metro. Okay. What are the features of this? So the train 18 during the development phase, इसका नाम train 18 रखा गया था, फिल्म्स में याद रखना.
operate without a locomotive and are based on a propulsion system called distributed traction power technology, by which each car of the train set is powered. It achieves maximum speed of 160 kilometers per hour. इतना बहुत है. अभी इसमें एक और सिस्टम लगाया गया. This came as a recommendation of Sam Petroda committee. So during the Congress government, in the second tenure, there was this committee under Sam Petroda which suggested that a lot of train accidents are happening, so we should have a train collision avoidance system. And this was developed as Kavach. Now this has been integrated in each and every train. So Vande Bharat Express offers aircraft-like traveling, so and safety with use of this Kavach. Okay. आज के लिए इतना काफी है. तो आप चाहिए तो इतना डॉक्यूमेंट पढ़िए और इसके साथ बाकी का भी वर्कआउट कर लीजिए. फिर बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे. टुडे देयर विल बी नो इवनिंग क्लास as I will be needing to go to Delhi today. We'll be back by night. So tomorrow we'll continue our classes as usual again, 11 baje. So that's that for today. Thank you. Take care.